when nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. 2024 election is going to decide the destiny of a nation. The answer is yes, mainly because of the way VVPAD is introduced, attached, working, and it makes electronic voting machine not a standalone machine. There is a report of the Citizens Commission on Election. अगर आप ये रिपोर्ट को पढ़िए तो आप समझेंगे कि इश्यू कितना गहरा है. This report has been signed by 6,500 citizens. It has distinguished IAS officers, scientists, engineers, and many others. ये जस्टिस लोकुर लेड कमीशन है. इन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है. ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैंने एक्सपर्ट से बात की, IIT professors in America, scientists, and I am also convinced that there is a possibility. There is a mistrust because of this VVPAD. मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि पहले था खाली ईवीएम मशीन, जो आप बटन दबाइए वोट गया और एक बटन दबाइए तो उसमें काउंट हो जाएगा सब. ये 2014 तक चला. 2014 के बाद आपने एक दूसरा डब्बा डाला जो ईवीएम के साथ अटैच किया, कॉल्ड वीवीपैड. जब से वो दूसरा डब्बा डाला तब से ईवीएम मशीन सीज टू बी ए स्टैंड अलोन मशीन. कि दूसरे डब्बे में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, वो जो डोंगल है उसके साथ उसमें आप प्रोग्राम करते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है, बीजेपी का निशान क्या है, कांग्रेस का निशान क्या है, दूसरी पार्टी का निशान क्या है. डोंगल कोई लेके आता है इंजीनियर, वो लगाता है वहां पे. उसमें क्या है किसको पता, उसमें कुछ भी हो सकता है. और फिर आपको जो रिसीट दी जाती है वो खाली आप देख सकते हैं 7 मिनट 7 सेकंड तक, 7-10 सेकंड तक आप देख सकते हैं उसको. फिर वो रिसीट डाली जाती है डब्बे में, जो आप नहीं डालते, मशीन डालता है. तो आपने पढ़ा क्या, डाला क्या, आई डोंट नो दैट. ओके. और वो प्रिंटर ऐसा है कि जो रिसीट आप थोड़े दिन ही पढ़ सकते हैं, उसके बाद वो फेड हो जाती है क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर है. तो ये कमीशन सीधी बात कर रहा है कि पहले ये प्रिंटर बदलिए जिससे हमारी रिसीट 5 साल तक पढ़ी जाए. सिंपल रिक्वेस्ट. दूसरा कि जो रिसीट है मुझे मेरे हाथ में दीजिए क्योंकि मेरा वोट है. मैं वो एक ऐसे डब्बे में डालूंगा जो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड ना हो. तब मुझे विश्वास हुआ कि मैंने जो वोट दिया है वो इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड नहीं है. फिर ये डब्बे में जो रिसीट है वो भी काउंट करिए, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट भी काउंट करिए, और मेक श्योर कि दे मैच. इफ दे डोंट मैच देयर इज अ प्रॉब्लम, इफ दे मैच देयर इज नो प्रॉब्लम. सीधी बात है. अब इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं रहा है. ये सुन नहीं रहा है, इसीलिए मुझे और डाउट होता है कि इतनी सीधी बात है, आप सुनिए, आप बदलिए. ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप ट्रस्ट बढ़ाइए लोगों का, क्योंकि हमारा वोट एज ए सिटीजन इज वेरी वैल्यूएबल.
मैं जो आपको दे रहा हूं तो उसको आप अच्छी तरह से हैंडल करते हैं कि नहीं, ये मेरी जवाबदारी है। ओके, डोंट टेक इट लाइटली। आप ये बदलिए, वी आर ओके, फॉरगेट अबाउट व्हाट हैपेंड। बट कैन वी रियली लुक एट फ्यूचर in 2024 and build trust that people's vote is handled properly? वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इंडिपेंडेंट है, वो क्यों सुन रहे हैं गवर्नमेंट सरकार की बात? सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन and say no, this is the responsibility of the election commission and they must provide answer to these public questions. कोई सुन ही नहीं रहा है अभी, इसलिए हमारी चिंता बढ़ती है। बड़ा सर सिंपल है। लेकिन सर एक बड़ी बात यह है कि जब अब 5 स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं, तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी जीतती है, बाकी स्टेट्स में आप हारते हैं, लेकिन यहां आप जीतते हैं। इससे पहले भी आप इलेक्शन हिमाचल में जीते, आप कर्नाटका में इलेक्शन जीतते हैं। तो फिर ये बात कैसे कैसे ये बात जस्टिफाई हो पाती है पब्लिक के सामने या पूरे सिस्टम के सामने कि जिसपे आप ईवीएम पे अगर आपको कोई शक है तो ईवीएम वहां फिर वहां वहां पे कांग्रेस पार्टी या और पॉलिटिकल पार्टियां जो है जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कैसे जीत रही हैं, अगर एक पर्टिकुलरली एक पार्टी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही अगर आप निशाना साध रहे हैं तो? देखिए, कौन जीता कौन हारा ये सवाल नहीं है। अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं तो आपको सब जगह जीतना जरूरी नहीं है, आप किसी को दूसरी जगह भी जिता सकते हैं। ये सवाल कौन जीता कौन हारा का नहीं है, ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये सवाल सिटीजन वोट का है। समझिए, ये सवाल सरकार का भी नहीं है, ये सवाल बड़ा सीधा सिटीजन वोट का है। आप मेरा वोट प्रॉपरली हैंडल करते हैं कि नहीं करते हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप प्रूव कर दीजिए। प्रॉपर हैंडल करना हो तो आप हमें पेपर रिसीट दीजिए और हमारी पेपर रिसीट भी काउंट करिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उससे ज्यादा टाइम लगेगा, लगने दो ज्यादा टाइम। कितना टाइम लगेगा? वो कह रहे हैं 3 दिन ज्यादा लगेंगे, अभी 5 दिन ज्यादा लगने दो, क्या फर्क पड़ता है? हम ये नहीं कह रहे कि कौन कर रहा है, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि देयर इज ए ट्रस्ट डेफिसिट। ये जो सिस्टम बनाई है वो फुल प्रूफ नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोले हम इसको मैनिपुलेट करके बताएंगे आपको। कोई कह रहा है हम सैटेलाइट से मैनिपुलेट करेंगे, कोई कह रहा है हम इससे मैनिपुलेट करेंगे। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन इतनी सिंपल बात जो है कि हमारा वोट जो आप प्रिंट करते हैं वो 5 दिन के बाद पढ़ भी सकते हैं हम। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज पुट इन ए डब्बा विच इज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। You don't give me the paper receipt, you show it to me for 7 seconds. That is not acceptable. खत्म। आप इतना कर दीजिए भैया, सीधी बात है, हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो देखेंगे, ये तो चलता ही रहता है। आज आप जीते कल दूसरा कोई जीतेगा, दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। सो डोंट गेट हंग अप ऑन कौन जीतेगा कौन हारेगा, डू द राइट थिंग। सर आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं बात को इसको प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये बात पब्लिक फोरम में है प्रूफ तो करना है ना, कि क्या प्रूफ? आपको मैनिपुलेट प्रूफ क्या होता करना? है ये सेट आप जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा सैटेलाइट से और सब चीजें, इसको कैसे आप प्रूव कर पाएंगे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं? और उसे और वीवीपैट की बात तो जो है 100% वीवीपैट की बात तो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियों का एक फोरम भी कर रहा है, जिसमें दिग्विजय सिंह हैं, लेफ्ट पार्टीज के बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने शायद मुलाकात भी करी है चुनाव आयोग से जाके इस बारे में। तो इसको आप लोग आके कैसे प्रूव कर सकते हैं, पहला सवाल। और दूसरा ये कि इसको फोरम को आगे कैसे लेके जाएगी कांग्रेस पार्टी, और क्या इंडिया ब्लॉक के लोग को भी इसको डिस्कशन करेंगे या करना चाहिए? हम सैटेलाइट से इंटरवीन करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं जो सिटीजन्स कमीशन रिपोर्ट में लिखी है, वो कि आप प्रिंटर बदलिए,
हमें पेपर रिसीट दीजिए, हम एक डब्बे में डालेंगे पेपर रिसीट को, और वो पेपर रिसीट you have to count, and the count of the electronic and the paper receipt should be matched. Okay, that's all. उतना करिए, हमारा ट्रस्ट बढ़ जाएगा. अब कोई कह रहा है सैटेलाइट से मैनिपुलेट होता है, वो उनको करने दीजिए. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ. पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना, वो उनकी जवाबदारी है. हम एज ए प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट सिटीजन विद नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं कि ये जो सिटीजन कमीशन का रिपोर्ट है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाए. उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. वही हम कह रहे हैं अभी. लेट्स टेक बेबी स्टेप्स. सर, लेकिन आप इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं. आपने राजीव गांधी के साथ क्लोजली काम किया, टेक्नोलॉजी को आप लोग लेके आए. टेक्नोलॉजी के लिए आप अपने आप को खुद बता रहे हैं आप कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी नॉलेज है, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी के एक विंग के चेयरमैन भी हैं. तो एज ए पॉलिटिशियन हाउ डू यू फील, बिकॉज 2024 के भी चुनाव हैं, इंडिया ब्लॉक का की बात हो रही है. इंडिया ब्लॉक के अंदर क्या ये ईवीएम का इशू भी होगा? क्योंकि 2018 में प्लेनरी सेशन हुआ 84th कांग्रेस पार्टी का, जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने. उस प्लेनरी सेशन के दौरान पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि हम ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर पे जाने की जो है पैरवी करते हैं. तो उस पे आपका क्या स्टैंड है एज अ पॉलिटिकल लीडर? पहले तो मैं आपसे बात कर रहा हूं एज ए सिटीजन हुज वोट मैटर्स. वो पहली चीज है जी. कि आई एम स्पीकिंग फॉर एवरी सिटीजन whose vote matters, whose vote is valuable, should be handled properly, and you should give me confidence and trust as election commission, because you are independent. And if you don't do, Supreme Court should intervene. That's one. Two, as a political person, I would request my party to take this very seriously. I would request all the alliance members to pay much more attention to this than you have paid. It is not a simple issue. Don't overlook it, because 2024 election is going to decide the destiny of a nation. It is going to decide the path that India takes in the future. And I'm worried about it. I'm worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference, that bothers me. When everyone thinks that everything good that happens in the country is only because of Prime Minister, that bothers me. When Prime Minister has no problem giving name to a national stadium on his own name while he's alive, that bothers me. So there are signals I'm getting which says we are on wrong direction. When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है. बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की. This is not how you build a modern nation. We have seen that the nations based on religion, whether it is Israel or Pakistan, are very different from nations built on democracy, freedom, human rights, diversity, inclusion, like America.
That's what we want. Our founding fathers very clearly articulated, understood, and put it in our constitution that everybody is equal. I don't care what religion you practice. I have to respect you for who you are and not what religion you follow. I'm not going to dictate what you eat, what you pray for. That's your personal freedom. And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. Okay. I said, my wife is very religious. I'm not a religious person. She has a little temple at home. Fine. She's entitled to do that. But don't get me involved. Okay. I'm not a religious person. That doesn't mean I don't agree with what she does. That's her privilege. I used to say earlier that I have outsourced my religion to my mother and my wife. They are doing a great job. I don't interfere. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. I would rather have him go to schools and libraries and scientific institutions and not visit lots of temples. Yeah. But that's my view. People have to decide how they feel about it. सर मैं आपकी बात समझूं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं रिलीजियस नहीं हूं, मैं धार्मिक नहीं हूं, मेरे परिवार में लोग धार्मिक हैं, तो आपको धर्म से कोई दिक्कत है या धर्म से कोई दिक्कत है या प्रधानमंत्री धार्मिक बात करते हैं इस चीज से दिक्कत है? मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं। मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए। आप देखिए, पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू ने धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लगाया। लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नहीं लगाया। Okay. It is okay to go visit temple once in a while if you wish. That's okay. Perfectly normal. But you can't make that the main platform. 40% of the people vote for BJP. 60% of the people do not vote for BJP. आप प्राइम मिनिस्टर सबके हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पार्टी के नहीं हैं. And that's the message people of India want Prime Minister to have. Saying, Mr. Prime Minister, you are not a Prime Minister of BJP. You are Prime Minister for everybody. And that's why we want you to come and address the press, handle their questions. Okay. Accept reality. Talk about employment. Talk about inflation. Talk about, science and technology and challenge. And it is okay for you to be vulnerable, Mr. Prime Minister. You are a human being. You don't have to be a macho man everywhere. It's okay. It's okay to give credit to other people. You don't have to take credit for everything. It's okay. Perfectly normal. We love you. We care for you. You're a Prime Minister of a nation, right? Okay. So be nice to opposition. Don't be nasty. It doesn't suit my Prime Minister of a country of 1.4 billion people to talk down on opposition. It doesn't look good. Once in a while, it's okay. But you can't be hammering day in, day out. It's not decent. I want my Prime Minister to be decent. Okay. This is me. This is my view. Okay. You don't have to agree with it. सर, आपको क्या लगता है कि अगर जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर राम जन्मभूमि, राम के नाम पे जो है वो चीजें कर रहे हैं
और जिन बातें जो इश्यूज हैं वो उस पे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि 2024 में राम काम आएंगे बीजेपी के? वो तो पीपल ऑफ इंडिया विल हैव टू डिसाइड. हम्म, People of India will have to decide. They are intelligent. They have to decide what are the real issues. Is Ram Mandir the real issue, or Berojgari is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue, or Mahንगाई is the real issue? Is Ram Mandir is the real issue, or the air pollution in Delhi the real issue? People will have to decide. सर क्या लगता है आपको, कौन अब इंडिया अलायंस बनने की जो बात हो रही है, और इंडिया अलायंस पे इतनी मीटिंग्स हो गई, अब सीट शेयरिंग पे आ गए हैं लोग, एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल पाएगा? और जब चुनाव फेस पर होने लगता है, पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन हो रहा है, तो क्या इंडिया अलायंस से भी कोई फेस होना चाहिए, और कौन वो हो सकता है? देखिए, पहले समझता हूं मैं कि ये इलेक्शन पर्सनालिटी का नहीं है. Personalities come and go. They can be run over truck tomorrow. So don't put the destiny of a nation based on personality. Put destiny of a nation based on idea. What is the idea of India? Who will protect your constitution? Who will enhance your democracy? Who will provide jobs? Whose performance is better? Who will worry about inflation? Who will worry about environment, education, health, housing, energy, infrastructure? It is not an individual. ये presidential election नहीं है, ये parliamentary election है. Don't try to convert it into presidential election, because that is not acceptable to public. That is not part of our constitution. We have parliamentary election and not presidential election. So you don't have to have a face. You have to have an idea. The idea is, we want democracy. We want human rights. We want to focus on inclusion, diversity, freedom of press. Those are the issues of the day, and not who is strong and who is against Modi. It's not Modi versus somebody. Okay. So you are saying, sir, that India alliance should be focusing on the issues, not the face. Absolutely. Face will come and face will go. Face will change. Idea will remain. Idea will continue. Okay. And there are many qualified people. You look at India Alliance, there are many qualified people, not one. You can probably find 10 qualified people. And even if, those who are visible, if you put them aside, there are lots of qualified people who are not visible also today. Okay. So India is full of talent. I'm talking about India Alliance, sir. I'm talking about India Alliance also. I'm talking about India Alliance also. Okay. So why worry about a face right now? There are lots of faces. Young, old, experienced, inexperienced, there's all kinds of candidates. So we'll see. Okay. सर कुछ और एक आध सवाल आपसे बस और पूछना चाह रहा हूं मैं, ये कि जो आपने कहा कि ईवीएम का इशू जो है, इसको पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, तो क्या सबसे पहले आपने अपनी पार्टी के फोरम पे ये बात उठाई है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी से आपकी इस बारे में बात हुई? जी. किस तरीके से सर आगे ले जाने के लिए उन लोगों ने कुछ, अगर आप बात शेयर करें, क्या रहा उनका रिस्पॉन्स, राहुल गांधी का रिस्पॉन्स? दिग्विजय सिंह, a senior political leader, former chief minister, is responsible for taking this agenda forward. He's working on it. He and I have spoken at length. I have also spoken to others. And I'm confident at the right level, people will help take this forward.
सर, इंडिया इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, वो अगर ये चीजें जो आप कह रहे हैं, ये चीजें अगर नहीं होती हैं, उस सूरत हाल में ही अगर 2024 में चुनाव होता है, तो क्या आप लोग एग्री 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 करते हैं उस चीज के लिए? आप जो है, आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होगी अगर चीजें नहीं होगी? 4 ही महीने का वक्त बचा है अब इलेक्शन में। वो तो इंडिया अलायंस को डिसाइड करना है कि हम्म। what kind of resistance they will build हम्म। if election commission does not agree to it. हम्म। Okay, that should be discussed. They have already passed a resolution. Okay, now they have to put some strength to that resolution. Okay. लास्ट क्वेश्चन आपका से ही पूछना चाहूंगा सर। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी की राजनीति इस वक्त कैसे आप देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी इमेज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, आपको क्या लगता है? और दूसरी बात ये कि जब जब राहुल गांधी, क्योंकि ये आपसे इसलिए पर्टिकुलर सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए मैं, क्योंकि जब जब राहुल गांधी बाहर फॉरेन टूर्स पे जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं और कोई बात करते हैं, तो वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर होते हैं कि उन्होंने कोई बात कही है, तो वो विदेशी धरती पर जाकर इस तरीके की बात कर रहे हैं और देश की बात देश में होनी चाहिए, विदेश में जाके देश को क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है। और भारत जोड़ो के बाद आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी की इमेज में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और क्या वो भी एक ऐसे कंटेंडर हैं जो इंडिया ब्लॉक को या इंडिया ब्लॉक की जो पार्टीज हैं उनको लीड कर सकते हैं फॉर द 2024 पोल्स? देखिए, राहुल गांधी एक युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका डीएनए पॉलिटिकल डीएनए है, वो बहुत समझदार हैं, लेकिन उन्हें समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इंडिया में आप ऐसा समझते हैं लोग कि आप कनाइविंग हो, आप झूठ बोलें, आप लोगों को मैनिपुलेट करें, तो आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं। अगर आप सच में मानते हैं, सीधी बात करते हैं, तो आप नाइव हैं। So according to me, Rahul Gandhi is very qualified. He may have a different style. He may have his own style, which we all have. But he is definitely qualified to lead. That's one. Two, when we go abroad, we don't criticize India. We criticize Indian government. Two separate things. Don't confuse criticizing Indian government with criticizing India. And even if you criticize India, it is okay. India is too big, too important. India is important to the world. Indian democracy is larger global public good. And we have all the right and responsibility to discuss India on global platform. India is not a small little country. India can decide the destiny of the world. It is the most populous nation on this earth. So we have to talk to the world. It is our responsibility to go meet all the global leaders and explain to them who we are, what we believe in. So why are you concerned? People unnecessarily react because they are uncomfortable, they are insecure. Nobody can insult India. How can a nation of 1.5 billion be insulted? No way. Just because I say something doesn't mean anything. It's my right to say it. So grow up. Don't live in this small little cocoon and think that world is only your India and India should remain, and we should talk to ourselves only about our issues and not go out. No, I don't buy that. But BJP and others are very concerned about whatever Rahul said, wherever he said it, they twist it. I remember on your channel,
Once I said something, it was completely twisted. Okay, and it was made into such a huge issue when I said something. It happens in media. That's okay also. I don't care. That doesn't change me. Okay? Because today's headline will fade tomorrow. Okay? But I have to stick to truth. I have to stick to my values. And Rahul Gandhi, when he goes abroad, we talk about all kinds of issues. It is our job to have open conversation with universities, students, intellectuals, politicians, business leaders. That's what we do, because we are a nation that matter to the world. That's all. Thank you, sir. Thank you for talking to us, sir. And I will be very much thankful to you for your last comments about the hope from the Congress Party for 2024 polls, and of course the India Alliance. How hopeful the India Alliance is. My last question, open-end question to you, if you answer this. I am very hopeful that people of India will respond to the need of the hour for the nation. I am very hopeful that people of India will think that the 2024 elections are extremely important for the future of India. We are at crossroads. And people of India will have to decide what kind of a nation they want to build. Do they want to build a Hindu Rashtra? Or they want to build a nation which is truly secular, plural, with focus on inclusion, diversity, sustainability, and the real challenges facing today: employment, inflation, infrastructure, energy, environment. People of India will have to also decide, do you want a dictatorial leader or you want a public servant? Do you want a person who will listen to everybody, or someone who will just have top-down approach, that I have all the answers and I'm going to tell you what needs to be done? People of India will have to decide whether, because of religious differences, are we going to divide our people or are we going to unite our people? Are we interested in promoting fear, spreading fear, or are we interested in providing security, safety to our people? I think these are the issues people of India will have to decide. The election is more about the future of India and not about, not about the personality.